અને સદાય હંમેશને માટે નારીના સન્માન માટે જે તત્પર રહ્યો છે એવો દેવ ભગવાન કૃષ્ણ, જેણે દ્રૌપદીને એ વખતે પણ કહ્યું હતું કે કલિકાલ આવશે ને સખા. દ્રૌપદી શું કહેતી હતી? કૃષ્ણને સખા. અને કૃષ્ણ પણ દ્રૌપદીને સખા કહેતા હતા. નારી ફક્ત એની ઉપર કંઈ આંચ આવે અને એક હુંકાર ભરશે ને દ્રૌપદી, તો હું શ્યામ તરત એના મનમાં પ્રગટ થઈશ. અને કૃષ્ણએ પણ સદાય વચન આપ્યું છે, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતી ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્મ્યાનમ સૃજામ્યહમ. હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે હું કઈ કૃતિની વાત કરું છું. હા દોસ્તો, મહાભારતની. તો હવે મહાભારત ટાઇટલ સોંગ પર ડ્રામા લઈને આવી રહી છે ધોરણ 8માં ભણતી વિદ્યાર્થીનીઓ. મહાભારત ટાઇટલ સોંગ આવો નિહાળીએ. 3, 2, 1, go. जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूँ ना, झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तो सुनना. सुन जरा तू सिंगारिया सांवरा, तू है मेरा. 64 के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौन? राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव. अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली. हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी लाज, मेरी लाज, मेरी तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी. कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अधर्म, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की. शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है. युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार लो. मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो.
सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। भारत है प्रचंड, शासन यही वो अशुभ हाथ है ना जिसने पांचाली द्रौपदी के बालों को पकड़ने का दुस्साहस किया था। पांचाली के केसों को तुम्हारी हक से न बोलूं। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग। નારી શાંત હોય તો સતી સીતા જેવી લાગે છે, પણ જો રૌદ્ર રૂપ ધરે તો ભગવાન શિવ સમાન છે કે કોઈની સામે જોયા વગર, દુશ્મનોનો અંત કર્યા વગર પાછી વળતી નથી અને મહાકાલીનું સ્વરૂપ લઈ લે છે। એટલી શક્તિ એક નારીમાં છે।